क्या ओवेरियन कैंसर रेकर करता है, यानी कि उसके बार बार आने के चांसेस होते हैं ट्रीटमेंट के बाद भी? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी और मैं एक गायनी कैंसर सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। सो रेकरेंसेस इन एनी फॉर्म ऑफ कैंसर कैन हैपन, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि क्या बायोलॉजी है उस पर्टिकुलर ट्यूमर की और क्या स्टेज है उस पेशेंट की, एंड क्या हम ट्रीटमेंट कंप्लीट कर रहे हैं. All these three things are very very important factor and they play a role in deciding कि किसी को recurrence आती है कि नहीं. So recurrence आना ना आना has got very little to do with what the patient is doing, but it has a large amount to do with the biology of the disease. So if it's a high grade ovarian cancer stage 3 stage 4, there are over 50% chances कि वो recur करेगा. पर recurrence से घबराना नहीं होता है because a lot has changed in the treatment lines. But first understanding कि recurrences जो हैं हमारी, they come in advanced diseases typically. Over 50% chance होता है in stage 3 and stage 4, and it is important to complete your therapy with surgery and chemotherapy in these cases, and most likely your oncologist is going to put you on a maintenance therapy. वो एक maintenance therapy पे डालते हैं जिससे कि आपके ovarian cancer के लौट के आने के chances reduce हो जाते हैं और आपको serially follow up पे डाल देते हैं. Follow up पे हम लोग चेक करते हैं sometimes by imagings like ultrasound, CT scan, PET CT scan, and tumor markers if you are a secretor like CA125, CA, CA19.9, depending upon क्या आपके elevated levels थे. And every 3 to 6 monthly we keep doing these tests to understand about recurrence patterns. And यदि recurrence आती है तो हमारे पास options होते हैं to sometimes give you repeat of the same chemotherapy जो पहले मिली होती है. If you are a platinum sensitive patient, if you are platinum resistant, then हम लोग second line chemotherapy पे आ जाते हैं. And there are very specific indications of doing surgery, a cytoreductive surgery and HIPEC, heated intraperitoneal chemotherapy, in recurrences of ovarian cancer. तो उसमें कब करी जाती है वो, जब डिजीज होती है confined to the abdomen and at least 6 to 12 months of treatment खत्म होने के बाद recurrence आती है, and it is cytoreducible, meaning कि हम सारी बीमारी को निकाल सकते हैं. तो इसमें सर्जरी करने का भी बेनिफिट होता है और एडिशनल स्टडीज में पाया गया है कि हाईपेक करने का भी फायदा होता है. हाईपेक यानी कि हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी. And once this is done, you have to take chemotherapy after this. So the combination of surgery and chemotherapy, अगर disease है amenable to surgery, is better than taking just chemotherapy alone. अगर बीमारी को हम निकाल सकते हैं, निकालने के बाद consolidate करें chemotherapy के साथ, then it is a better option compared to just shrinking the disease with chemotherapy, because the chances of recurrences are higher. But not all cases require surgery, and everything has to be checked and monitored case to case dependency. So recurrences are common in advanced ovarian cancer. Fear not. Please keep getting your regular tests done, and if there is a possibility कि आपको कोई maintenance therapy पे डाला जा सकता है, so please ask your oncologist to put you on one. उसके लिए sometimes we do specialized genetic testing and even molecular testing like BRCA and HRD to put you on these PARP inhibitors or bevacizumab. And despite that, अगर recurrence आ जाती है, निराश मत होइए और अपने oncologist से बात करिए, whether you are a surgical candidate or you can undergo next line of therapy.